Okay, good evening everyone. Good evening. Let me know in the chat box if I'm clearly audible and visible to all of you. Good evening. Is it fine with my audio and my video? Yeah, I hope I'm clearly audible and visible. Well, welcome back to another session on NSEJS biology जिसमें बेटा हम conceptual questions practice कर रहे हैं, application based क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं विच आर वेरी हार्ड टू फाइंड इन बुक्स दीज डेज। और बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली डिजाइन हैं फॉर द एनएसईजेएस एग्जाम, जिसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को चेक किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं रादर देन की क्वेश्चंस डायरेक्टली आपकी थ्योरी में से आए। सो this is the second session for NSEJS Sprint Batch 2023, जिसमें हम ऐसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड आज बेटा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट देंगे, दैट इज द पार्ट 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू ऑल वेरी मच एक्साइटेड एंड आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करके आए हैं, रिवाइज करके आए हैं, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर, राइट? सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Very good. So in a state-of-the-art virtual laboratory, students use an advanced circulatory simulation app. The app provides a scenario where a subject's blood pressure suddenly drops to a dangerously low level. The students are tasked with understanding and addressing the situation. Which of the following actions would be the most appropriate response to counter the low blood pressure in this scenario? To summarize the question, you are given a condition in which the blood pressure of the subject, or like in the application, or like the question can come in a way कि you are a doctor and there is a patient जिसका blood pressure बेटा बहुत abruptly drop कर रहा है। So what will be your next step? आपको blood pressure, low blood pressure का extreme case है, the blood pressure drops to a dangerously low level. What are you going to do? Option A, administer a vasodilator to increase the peripheral resistance. Option B, infuse a hypertonic saline solution to increase the blood osmolarity. Option C, inject epinephrine to stimulate and increase in heart rate and cardiac output. Option D, initiate a blood transfusion to increase blood volume and pressure. बेटा क्या हुआ है, लो ब्लड प्रेशर का एक्सट्रीम केस है, आप क्या करोगे? ओके, यूज योर डॉक्टर माइंड एंड टेल मी व्हाट विल यू डू। You will administer a vasodilator, you will infuse a hypertonic saline solution, you will inject epinephrine, or you are going to initiate a blood transfusion. What should be the answer to this question? Yeah, what should be the answer? What should be the answer to this question? Okay, students are saying it should be C. What about other students? Yeah, good. Okay, so everyone is saying C. C should be the answer. Let's check. Yeah, so C is the right answer, beta. What we are supposed to do? We are supposed to inject the epinephrine. Epinephrine कहाँ से produce होता है बेटा? So epinephrine, it is basically produced from the medulla of the adrenal gland. Correct? So epinephrine कहाँ से release होता है? From the medulla of the adrenal gland. And what it will help? So ये क्या करेगा? So बेटा, it will stimulate the heart to beat faster and increase the cardiac output. Okay, it will stimulate the heart to beat faster, and as a result of it, the cardiac output will increase. This will help to elevate the blood pressure to a safer level. So बेटा, low blood pressure case में you can actually inject epinephrine. Epinephrine कहाँ से produce होता है बेटा? So from the medullary region of the adrenal gland. Okay, so ये आपको पता होना चाहिए। एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम एड्रेलिन हार्मोन भी है। सो एपिनेफ्रीन और एड्रेलिन, नॉर एपिनेफ्रीन और नॉर एड्रेलिन। बेटा एपिनेफ्रीन आपकी फाइट और फ्लाइट कंडीशंस में रिलीज होता है व्हेन यू आर इन अ डेंजरस सिचुएशन, और नॉर एपिनेफ्रीन हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज इट फंक्शन? टू increase the cardiac output. Yeah, that is one of its function. It acts as a vasoconstrictor, जिसकी वजह से बेटा ये blood pressure को increase करने की क्षमता रखता है। I hope this was clear to all of you. Now next question. In a cutting edge medical training facility, students are utilizing a sophisticated circulatory system simulation app. The app allows them to experiment with different factors influencing the blood pressure. In a particular simulation, they observe a subject experiencing increased blood viscosity. Okay, so this increased viscosity is a result of the medical condition. They need to determine the potential consequences and appropriate measure. Consider the subject's increased blood viscosity due to a medical condition. What would be the most likely consequence and appropriate action? So what is actually happening?
बेटा हो क्या रहा है, सो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ चुकी है, मतलब जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, जो ब्लड है वो थोड़ा सा ज्यादा, उसकी डेंसिटी हैज इंक्रीज, इट हैज बिकम अ लिटिल व्हाट, इट हैज बिकम अ लिटिल thick. So what will you do? What are going to be the consequences and what should be the appropriate action needed? So consequence है increase peripheral resistance, action administer a vasodilator to reduce resistance. Consequence decrease cardiac output, action infuse a hypertonic saline solution to improve blood osmolarity. C consequence elevated heart rate, action administer an anticoagulant to decrease blood viscosity. Consequence lowered blood pressure, action initiate a blood transfusion to increase blood volume and pressure. What should be the answer to this question? Okay, now this question sounds very difficult, but थोड़ा सा concepts को use करना है and you have to guess what should be the right answer. Okay, so tell me the right answer. क्या होना चाहिए? Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? So students are saying it should be B. Okay, I'm getting multiple responses. Well, let's check out the right answer. It is actually A. Consequence क्या होगा बेटा? When the blood viscosity will increase, so it will lead to increase in the peripheral resistance, or it will lead to higher peripheral resistance, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एडमिनिस्टर अ वासोडाइलेटर. ठीक है, यू विल हैव टू एडमिनिस्टर अ वासोडाइलेटर टू रिड्यूस रेजिस्टेंस. बेटा ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है. ओके, यू विल नॉट यूज अ एंटीकोगुलेंट. आप एंटीकोगुलेंट यूज नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे बेटा? एंटीकोगुलेंट का मतलब है दैट इट इज गोइंग टू इनहिबिट क्लॉट फॉर्मेशन और ब्लड कोआगुलेशन, राइट. बेटा अंदर में एंटीकोगुलेंट आपको तब यूज करना होता है जब बॉडी में कहीं पे ब्लड की क्लॉटिंग हो रही हो. दिस इज नॉट द केस ऑफ क्लॉटिंग. इट इज एक्चुअली दैट द ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ गई है. अगर ब्लड थोड़ा सा थिक हो जाएगा, सो बेटा आपकी जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहने का मतलब है लाइक द ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स दैट यू आर हैविंग इन योर बॉडी पार्ट्स और इन योर ऑर्गन्स, right, in your body part, that is we are actually talking about the systemic circulation. तो systemic circulation में जो resistance है वो बढ़ जाएगा. so हमें क्या करना होगा ऐसे केस में? blood flow करने में because of its increased viscosity blood को flow करने में दिक्कत हो रही है. so you can easily administer a vasodilator will increase the diameter of the blood capillary so that the blood vessel so that the blood can easily flow through it. okay, so the answer is option A, that कि बेटा हमारा इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी एंड वी विल नीड टू इंजेक्ट अ वासोडाइलेटर. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस? In an advanced neurobiology laboratory, students are using a cutting-edge nervous system simulation app. The app allows them to explore the effects of neurotransmitter imbalances or neuronal signaling. In one simulation, they manipulate the level of acetylcholine, a neurotransmitter. Acetylcholine is crucial for both the central and peripheral nervous systems. What would be the expected effects of a decrease in acetylcholine level in the synaptic cleft? So what is happening? We are actually reducing the level of acetylcholine. So what are the expected outcomes? A. Enhanced postsynaptic inhibition due to increased acetylcholine binding. Increased action potential frequency due to reduced acetylcholine degradation. C. Muscle paralysis due to compromised neuromuscular transmission. या D. Heightened synaptic plasticity due to decreased acetylcholine availability. What will happen? If the level of acetylcholine drops down, what will happen? Very easy. Just a hint, you need to think about the function of acetylcholine. Okay, it's a neurotransmitter, we know about it. किस चीज में काम करता है, कहाँ काम करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, आपको बस ये समझना है और आपको समझ में आ जाएगा. What should be the answer to this question? Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? So best book for bio after NCERT Campbell is not available. Well, after NCERT, I can suggest you that go for NCERT Fingertips. NCERT Fingertips is very good. Okay, so you can refer to NCERT Fingertips if you're not having Campbell. Campbell else, you can get it online. You can search
on free resources websites, and there you can find Campbell uploaded. Okay, so yeah, what should be the answer to this question? Is it A, B, C, or D? Okay, so I think students are saying it should be C, and C is the right answer. What is the function of acetylcholine? So beta, acetylcholine क्या है? Acetylcholine is released from the presynaptic neuron into the synaptic cleft. Acetylcholine क्या करता है? It binds on the acetylcholine receptors present on the postsynaptic membrane causing its depolarization. ठीक है, आपका एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट से जाके बाइंड कर जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग रिसेप्टर्स पे, एंड इट विल ब्रिंग अबाउट द डीपोलराइजेशन, ट्रांसमिटिंग द सिग्नल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूरॉन टू द अनदर वन, टू द नेक्स्ट वन. बट अगर हमारा एसिटाइलकोलिन का लेवल ही ड्रॉप डाउन हो जाएगा बेटा, सो ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ द इम्पल्स, राइट, सो दिस ट्रांसमिशन विल नॉट हैपन. हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो सकता है थ्रू द गैप जंक्शंस, और it can happen like the the impulse transmission can happen through chemical through the chemical pathways, है ना. आपका केमिकली भी हो सकता है with the help of the neurotransmitter. okay, so आपका बेटा यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली अगर हमारा एसिटाइलकोलिन नहीं होगा तो जो information है it will not be passed on and it can lead to muscle paralysis due to compromised neuromuscular transmission. So the answer is option C. I hope this is clear to all of you. Now, next one. In a state-of-the-art neuroscience research facility, students are using a highly advanced nervous system simulation app. The app allows them to explore the impact of myelin on nerve impulse conduction. In a specific simulation, they investigate how a demyelinating disease affects nerve impulses. In the simulation focusing on a demyelinating disease where myelin is gradually deteriorated, what will be the expected consequence on nerve impulse conduction? So what is happening? The myelin shield over the neurons is getting degraded. It is getting degenerated because of some sort of neurological disorder. Okay. So what will be the expected outcome? A. Faster nerve conduction due to reduced resistance along the axon. Slower nerve impulse conduction due to impaired solitary conduction. C. Enhanced nerve impulse conduction due to increased axonal diameter. D. Unaltered nerve impulse conduction due to compensatory mechanism by Schwann cells. So you have to tell me what should be the answer to this question. Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? This question sounds very difficult, but it is very easy. You just need to use some basic concepts and you will through. I didn't. A, B, C or D. Okay, so students are saying it should be B and B is the right answer. So basically बेटा ये आपका myelinated और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में हमें पता है कि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स व्हाट यू हैव द नोड ऑफ रैनवियर, और जो इंपल्स ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट node of Ranvier to node of Ranvier होता है directly like this way. Okay, so this is the importance of the myelin shield, right? And this is known as a solitary conduction जब node of Ranvier के across होता है. But अगर आप myelin shield हटा दोगे so आपकी throughout the neuron जो है the nerve conduction has to be done, has to be conducted. So इसलिए the answer is B, that slower nerve impulse conduction. देखो हमें पता है solitary conduction is faster than the conduction that happens in the non-myelinated neurons. So what is happening due to the disorder? Myelinated neurons are getting converted into non-myelinated neurons. So आपको पता है non-myelinated में slow होता है. So इसलिए the answer is B. Last question for today's class. In a cutting-edge endocrinology lab, students are using an advanced endocrine system simulation app. The app allows them to explore the intricate feedback mechanism involving the hypothalamus, the pituitary gland, and the thyroid gland. They conduct a simulation where the thyroid hormone levels in the blood are excessively high. What will be the expected consequences on the hypothalamus pituitary thyroid feedback loop, and how would this affect hormone production? Okay, how is it going to help? How it is going to be regulated? A. Consequence: increased production of thyrotropin releasing hormone TRH, effect on hormone production, enhance thyroid hormone synthesis and release. B. Consequence is decreased production of TSH, effect on hormone production, suppress thyroid hormone synthesis and release. C. Consequences: increased production of
TBH or TBG, effect on hormone production, increased binding of thyroid hormones, limiting their availability, or is it D, consequences, decreased production of thyroglobulin, effect on hormone production is increased thyroid hormone synthesis and release. What should be the answer to this question? Is it A, is it B, is it C, or is it D? A, B, C, or D? What is the answer? Okay, so the students are saying it should be B, and B is the right answer. What happens is, you just need to look at the theory. We have the hypothalamus. हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे आप टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हो. हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन, जो बेटा स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन. नाउ दिस थायरोट्रोपिन विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन्स. ठीक है, ट्राई आइडोथ्रायोनिस एंड टेट्रा आइडोथ्रायोनिस रिलीज करने के लिए वो आपकी थायराइड ग्लैंड से कहेगा. सो अगर ऑलरेडी हमारे बॉडी में व्हाट इज हैपनिंग, द क्वेश्चन सेज कि ऑलरेडी थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है. सो थायराइड हार्मोन का लेवल अगर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा बेटा, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड ये सीधा जाके क्या होगा, ये सीधा जाके स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल देगा टू द हाइपोथैलेमस एंड टू द पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस से हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन या हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन कहेगा कि तुम टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन को रोको, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके कहेगा कि प्लीज तुम टीएसएच या थायरोट्रोपिन के रिलीज को रोको. तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, आपका थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसका सिंथेसिस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन द लेवल्स विल कम बैक टू द ऑप्टिमम वैल्यू. ओके, I hope this is clear to all of you. The explanation is clear. These questions are very important. If you are able to solve at least 4 questions out of 5 correctly, you are on the right track. अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेटा आप इसे सॉल्व कर ले जाओगे. Okay, so that's all for today's class. Thank you very much. If you have any doubt, you can ask me right now, or you can also mention it in the comment section. I'll reply back to you. Thank you very much. We'll see you on the upcoming Friday, जिसमें बेटा हम वीक क्विज करेंगे. वीक क्विज़ेस आर गोइंग टू बी वेरी मच एक्साइटिंग. उसमें आप लाइव चेक कर सकते हो, आप लाइव compete कर सकते हो with your actual competitors who are going to be appearing in NSEJS this year. Thank you very much.